हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। थोड़ा कैमरा सेट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से वन ऑफ द मोस्ट अल्टीमेट गेम ऑफ 2023 फाइनल फैंटेसी 16 की लाइव स्ट्रीम पे। तो भाई साहब, मतलब बहुत तगड़ा गेम चल रहा है। प्लेलिस्ट मैंने बना ली है भाई, पिछले के वीडियो देख लेना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तगड़ा गेम है अभी तक का ये 2023 का। और मतलब लास्ट पार्ट में हमने देखा कि स्टोरी 5 साल आगे बढ़ चुकी है और हमारा दोस्त जो सिड था वो भी मर चुका है और उसका जो डोमिनेंट था उसकी पावर हमारे पास आ चुकी है। हम काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं और उसका जो मिशन था वो भी हम कर रहे हैं क्योंकि उसका एक विज़न था कि वो चाहता था सब लोग हंसी खुशी रहे, ऐसी जगह बनाना चाहता था वो ब्रांडेड लोगों के लिए। तो वो हम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें दुनिया को बचाना है डेड जोन से, क्योंकि बहुत सारा मैजिक यूज़ कर रहे हैं लोग और डेड जोन क्रिएट हो रहे हैं, तो वो भी हमें करना है। तीसरा है कि भाई एक अजीब सा लास्ट पार्ट में बहुत धांसू फाइट हुई थी टाइफून और अल्टीमा के साथ। अल्टीमा पता नहीं एक नया कैरेक्टर है जो कि पता नहीं कहाँ कौन से डायमेंशन से आया, और जोसुआ भी दिखा था। जोसुआ मरा नहीं है शायद, मुझे लगता है, क्योंकि लास्ट स्ट्रीम में जोसुआ भी दिख गया था। तो काफ़ी कुछ हुआ लास्ट स्ट्रीम में, तो अभी की स्ट्रीम करते हैं कंटिन्यू। लेकिन पहले मैं ये वीडियो कर लेता हूँ शेयर। देखते हैं भैया शेयर का ऑप्शन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस स्ट्रीम पे आए। क्योंकि मतलब भाई मैं बहुत सरप्राइज हुआ क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट है इसमें और ऐसे ऐसी पावर्स हैं भाई। मैं पागल हो गया मतलब देख के ना। कंटिन्यू करेंगे वहीं से ही। अपग्रेड हमने लास्ट टाइम कर लिया था खुद को और हम जा रहे थे मार्थास के पास। कुछ तो गड़बड़ हो गई थी मार्था के वहाँ पे। Let's get you to a physical, shall we? I'm sorry. Best off staying where we are now. तो बेसिकली मार्था जो कि हमारी एक दोस्त थी, तो उसको शायद कुछ लोग उठा के ले गए हैं, इम्पीरियल के लोग आई थिंक। तो अपने को जाना है और शायद उसको बचाना है क्योंकि वो एक बहुत नोबल काम कर रही थी भाई। और हमारी दोस्त की सबसे मेन चीज़ तो ये है। किलर बीज देख रहे हो? रामूस की पावर भी आ गई अपने पास। रामूस जो था मतलब ये डोमिनेंट था, उसका सेट का डोमिनेंट था। तो भाई रामूस की पावर आ चुकी है अपने पास। तो ये रामूस की पावर का एक पार्ट है छोटा सा। ओके, तो अपने को जाना है वहां पे। रास्ता देख लेता हूँ। Look, up ahead. Martha, are you ओह, hurt? मार्था तो यहाँ Don't पड़ी है worry, भाई। it'll be. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. What happened? The damn Black Shield says what happened. The Black Shields.
The ब्लैक bastards शील्ड क्या caught है? wind. The abbot and I were helping bear it. They were going to hang us both. When the sick rose from their beds, poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Then they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. तो ब्लैक शील्ड ने अटैक करा था भाई मार्था के ऊपर। ओके, कौन है ब्लैक शील्ड? नो आइडिया। Black Shield. Is this some sort of twisted joke? There's only ever been one order of shields in this area, and they fought to defend all our citizens. Seems a step too far. Even for the Empire. आजा। ओके, रामूस की ये वाली पावर मेरे समझ में तो नहीं आई फिलहाल। Are we too late? यहाँ तो बवाल काट रखा भाई, लाशें बिछा रखी यहाँ तो। ओ भाई, डेड बॉडी में डेड बॉडी पड़ी है भाई यहाँ। No. Damn it. I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the ओके, Benders तो to इन्होंने us. करा था अटैक भाई यहाँ। Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offense. ओके, तो ये है शायद ब्लैक शील्ड। Shall they be punished? Such is the law. To dwell in darkness that we may ओ purge the भाई, light and इससे welcome लड़ने the मजा आएगा भाई। ये थोड़ा सा लग रहा पावरफुल होगा। On these our swords we swear. आजा बेटा, तुझे भी सबक Dare you सिखाऊं। speak those words? Have you no honor? Clive. This won't take long. सब बच्चे हैं। अबे मच्छर जैसे मेरे को लगा कोई तो होगा पावरफुल हमें झेलने का। Is that all of them? I think so. ठीक है, ये क्वेस्ट कंप्लीट हो गया। मार्था को हमने बचा लिया और इनको भी I पेल didn't दिया। see the abbot. He may still be alive. Found her. The abbot. एबर्ट को तो निपटा दिया भाई लग रहा है मुझे। एबर्ट बेसिकली The bear is 5 साल protected. पहले हमें मिला था ये बंदा। Calling upon
इसका काम ये मतलब अच्छे के लिए काम कर रहा था, ब्रांडेड लोगों को जो भी बीमार पड़ जाते हैं कर्ज के कारण, क्रिस्टल के कर्ज के कारण, उनकी देखभाल कर रहा था बेसिकली ये। We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true. The Black Shields will return. The cuttings will continue. Rosaria will never be safe. अबे आ गए। Tell Mother. ठीक है भाई, आ गया बड़ा, बहुत ज्यादा पका दिया इसने। He's gone. ये तो निबट गया भाई लग रहा मुझे, अनफॉर्चुनेटली। We've laid the abbot to rest. But the bearers, they didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds. I've gathered the bearers' remains. There's a drawbridge not far from here. If the abbot was still with us, he'd have taken the... I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperials. रामोस की पावर अच्छी है, लेकिन मुझे सीरियसली जो अच्छी लगी वो फिनिक्स की पावर ही लगी फिलहाल। ओके, अपने को वहां पे जाना है भाई, बहुत ज्यादा घूम के जाना पड़ेगा अपने को। ओ भाई, यहाँ तो बड़ा वाला ड्रैगन हमारा वेट कर रहा है। ओ भाई, आरी मैन, ये कुछ अलग सा है भाई, रैंक सी। Spotted us, tall boy? What do I say? Of course it has. It's a floating eyeball. ओ भाई, ओह मैन, Nice try.
भाई ये छोटा सा क्रीचर है लेकिन है बड़ा धांसू भाई है। मतलब साइज में इतना खतरनाक भी नहीं है ये, जितनों से हम भिड़े हैं अभी तक। ओ भाई सब मार देगा के आरी मैन। गया भैया आरी मैन का। आरी मार दी भाई मैंने, आरियों से खत्म कर दिया मैंने इसको। सीरियसली मैन, You didn't see that coming. निपट गया भाई आरी मैन। एक शैतानी इविल क्रीचर टाइप का लग रहा था भाई ये थोड़ा। That must be the bridge. तो भाई बियरर्स की जो रिमेन्स बचे हैं उसको शायद बाहर हैं हम यहाँ पे। So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. And now they are truly free. I hope so. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right.
ठीक है भाई, वापस जाना है अपने को मार्थास के रेस्ट में। मतलब और दिन मैं स्ट्रीम करता हूँ रात को, लेकिन ये गेम सीरियसली ऐसा है कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा कि यार भाई दिन में कर ही लेते हैं स्ट्रीम थोड़ा सा। Thank you, Founder. They called themselves our country. यहाँ से कुछ सामान वामान भी देख लेते हैं, क्या पता कुछ अपग्रेडेड वेपन मिल जाए। और कुछ भी नहीं है भाई। That all, is it? No one survived then. I'm sorry. Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago. Of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these Black Shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. And picking what goes on in that woman's head's a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a ये छोटे मोटे वो चल रहे हैं फिलहाल अभी, मतलब ना उस लेवल की फाइट और वो नहीं चल रहा है फिलहाल। छोटी मोटी दिक्कतों को सॉल्व कर रहे हैं हम कि भैया मार्था को दिक्कत है, इस टाइप का चल रहा है अभी। Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. ठीक है भाई, वापस चलना है अपने को हाइड अवे में। पहले यहाँ से निकले।
हाइडो में वापस कैसे जाएंगे भाई? यहाँ तो सीधे डेड जोन ही दिख रहा है भाई मुझे। ओके, ओपन वर्ल्ड मैप। ओके ओके, वही वही मैं सोच रहा था यार। ठीक है भाई, हाइड हुए में चलते हैं वापस। Now, where's Gav? I hear there's trouble. लो भैया, गैव वापस आ गया। ओ भाई, गैव की ही आंख चली गई भाई। Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. Well, the two nations beat their shields. The rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. They'll never see us coming. It's time we moved on the mother crystals. Four mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. ओके, तो मदर क्रिस्टल बेसिकली अभी और भी पार्ट बचे हैं मदर क्रिस्टल के। ओके, With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. कप का तो भाई बहुत डेडली है भाई, डेडली लॉर्ड है बहुत वो, क्योंकि कप का टाइटन है, उसका जो डोमिनियन है वो टाइटन बन जाता है भाई, बहुत बड़ा वाला। I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rossfield. Lord Byron Rossfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait, Rossfield. And you're a Rossfield, of course. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune. Along with a handsome fleet of ships.
settled then. What are we waiting for? Eh? Huh? Otto's counter is now open. Okay. What are we waiting for, indeed? जर्नी टू हॉक्स क्राई क्लिफ। ओके, अपने को क्लिफ पे जाना है, हॉक्स क्राई क्लिफ। और आई नो क्यों जाना है, क्योंकि दो जो रिपब्लिक के बीच में जो बैटल होने वाला है शायद उसको मॉनिटर करने, क्योंकि उसी बीच हम अपना काम भी साफ कर लेंगे बेसिकली। Think it's all right to touch him? लेकिन मैं पहले फोर्ज जाके थोड़ा सा अपग्रेड करूंगा। अरे मुझे फोर्ज जाना था यार। शेरॉन के पास देखते हैं क्या है भाई। कुछ खास नहीं है भाई। Okay, yeah. So, will it be? Okay. Anything else? कुछ अपग्रेड भी नहीं आया भाई खास, तो अभी फिलहाल अपने को यहाँ से निकल लेना चाहिए भाई। ओके, तो ये है आई थिंक वो क्लिफ, हॉक्स क्राई क्लिफ।
you think it was wise to leave, Gav? He didn't seem pleased. I needed his eyes and nose in Dalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. Besides, he has a knack for that sort of thing. That he does. And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. I always knew that I would कुछ तो return. भाप चुका है भाई टॉर्गल. Return to Ironhome. For what? After learning the truth, you were given the chance to face your past. If I am to continue at your side, I must do the same. We will face it together then. To the end. Come on. Bloodlines. How far do you think your mother's reach extends? Will we find the same tragedy? अपने को यहाँ से जाना है एम्बर में. More than likely. Which is why we should hurry. There are still many settlements between here and Port Isolde. We visit as many as we can and hear their stories. Starting with the village of Amber. किधर भी ये पेड़ पौधे इनसे कब तक लड़ता रहूं भाई. मैं कोई बड़ा गुंडा लाओ. ठीक है. आई थिंक ओके हम एम्बर में पहुंच गए हैं. Justice is what it is. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! Nothing but loyalists. Jill, look. Rosaria must be cleansed of the stain which befouls her, that she might rise once again from the ashes. तो भाई ब्लैक शील्ड यहाँ भी पहुंच गए. It would be a pity to make examples of you all for the transgressions of but a handful. Of course, Your Lordship. You shall have our full cooperation. What business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. ओके तो ब्लैक शील्ड यहाँ भी पहुंच गए हैं भाई. कुछ तो बवाल है. एक सेकंड. ये क्या है? I ain't got much, but what's mine is yours for a price. What's mine is yours for a price. वाह भाई. Excuse me, but what was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There have been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a Black Shield was murdered. The Empire wants answers, and what the Empire wants
Empire gets. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. ब्लैक शील्ड जो है भाई उनके ऊपर किसी ने अटैक कर रखा है और उनकी सप्लाईज चोरी कर ले रहा है, इसीलिए वो विलेज में आए थे पूछताछ करने. ओके. 100? I heard it were 1,000. We're going hunting for outlaws. How'd you like that? You seen him, didn't you? I'm sorry. The Black Shields. Just now. You seen them, didn't you? At least I think there was a Black Shield. Can't say I ever saw one before. Was this the first time they visited the village? What do you think? Amber's the arse end of nowhere. And they thought we might be harboring firebrands. Huh. If only we were. I might have turned them in and become a Black Shield myself. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? I don't know. But we need to find out. तो लोकल से तो बात कर रही है भाई, अब कितना लोकल से बात करूं? What did those knights want, Father? I told you to stay in the house. Go on. Word is, Port Isolde's closed her gates to all but the Highborn, and now a great camp sprung up along the walls. Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't you go telling these strangers a thing. I speak for the people of this village, and we have nothing more to say to you. You are to leave Amber and never तो come ये back. चचा भाई बड़े गुस्से में आ गए भाई हमें देख के. I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. The Empire is a harsh master. Its demands are great, and its justice swift. But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This village will not become another East Pool. Then we shall be on our way. तो चचा ने तो भैया इनकार कर दिया कुछ भी बताने के लिए भाई, ब्लैक शील्ड्स के बारे में क्यों आए थे आखिर इस विलेज में. ओके. These people live with a knife to their throats. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Obedience bought with fear. Are you all right? Sorry, it's nothing. We still don't know who the Black Shields are looking for. Well, whoever they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rosari would have the courage to stand against the Empire? A new ally would certainly be welcome. Can we find them before the Imperials do? Perhaps the next village will yield more answers. Perhaps. ओके. तो नेक्स्ट विलेज में जाना है अपने को, क्योंकि अपने को पता नहीं लग पा रहा भाई क्या मामला है आखिर, ब्लैक शील्ड वाला सीन क्या है. This pass will take us through the mountains. And directly into the path of whoever or whatever lurks here. ओ भाई. What do you think is waking? The mother crystals collapse? ये क्रीचर यहाँ भी हैं साले स्टार वॉर जैसे ना.
ओके, ब्लैक शील्ड है यहाँ पे। पहले कर क्या रहे हैं आखिर ये ब्लैक शील्ड का सीन क्या है भाई? फॉलन हंटर ये यहाँ भी है साले। एक ही बारी में चारों को लपेट दिया भाई। ब्लैक शील्ड फिर से। ये रामू की पावर इतनी सही नहीं है भाई, रामूस की। अबे कमजोर हैं भाई ये बहुत क्रीचर, छोटे मोटे मेरे सामने अब हो गए कमजोर बेसिकली। Blood, Clive. And still wet. भाई टॉर्गल एकदम मोशन में आ चुका है भाई। The Black Shields. You know who we are, and still, you would bear your steel. Why then? We owe you our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may ओके तो ब्लैक शील्ड का फिर से आ गए भाई। ये ब्लैक शील्ड बड़े पकाऊ है भाई, या तो पावरफुल होते। our swords we swear. Say that again. I'll show you a true shield
चूरी कर दिया इन्होंने, लग रहा है भाई मुझे असली ताकत दिखाने के लिए अपनी। ओ भाई ब्लैक शील्ड थोड़ा पावरफुल है भाई। पड़ा नहीं इसको लग रहा भाई मेरा चक्रवात वाला मूव। ओ भाई ये ब्लॉक कर दे रहा भाई। Tell me what I want and the end will be swift. Who are you looking for? Why, you... We come bearing a message. Your friends have been found. The branded you freed from our camps. They await you in Ordeal. Guardians of the Flame. Those are Old Hill's gates. Then we hurry. ठीक है भाई, ऑडियल से गेट पे जाना अभी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कुछ तगड़ी फाइट होने वाली है भाई। मतलब हो जाए तो अच्छा ही है, मैं तो यही चाहता हूँ। Find something, boy. Death. ओह मैन, बहुत बुरी तरीके से मार रखा है भाई बैंडिट्स को, बियरर्स को, सॉरी। This was my mother's doing. आखिर इसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है भाई? Why would anyone? I don't know.
ये तो हमें पता है कि 13 साल, सॉरी 13 नहीं, आज से 13 + 5 18 साल पहले जब जोशुआ और इसकी फाइट हुई थी, उसके बाद इसकी माँ का ही कुछ रोल था उसमें, इसकी बाप की हत्या के पीछे। I will learn what madness drives her, and I will end it. We should go. Yes. We can't leave them here like this. We won't. But if the Black Shields have made it this far south, they may already be in Port Isolde. We're approaching Gila Bridge. Though I doubt the Empire would let us cross over to Rosabeth. I did, Mummy. I could hear him shouting from down the road. They're all Rosarian. But this is their home. I'm hungry. पोर्ट इसोल्डे जाना अपने को। The Lazarus. What happened to this place? My mother happened. The nobles who lived here didn't stand a chance. Let's hope my uncle fared better. That's the main gate. And it looks like we're not the only ones hoping to get in. तो भाई यहाँ तो बहुत सारे लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, पता नहीं हमें जाने देंगे या नहीं। Those crystals belong to us all! I said, where were you, filth? Back to your stars! Cut you down where you stand! Just try it! No chance of slipping through unnoticed. We'll need to find another way in. I thought we might be able to reason with the guards. Or at least bribe them. I suspect everyone in that crowd thought the same. Was that the only way in? Officially, yes. Strictly speaking, no. My uncle once told me that the nobles had tunnels built, so that they could visit town without having to walk amongst the rabble. Okay, तो टाउन के अंदर घुसने के लिए हम टनल के रास्ते जा सकते हैं, ऐसा कहना है क्लाइव का। Okay. We'll find our way into the city there. If you're sure. And the entire place looked abandoned. Do you think it's safe? As long as it is abandoned. The
The good news is we haven't seen a single black shield since Old Hill. Maybe they found who they were looking तो for. लजारस डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं हम और सीधे रास्ते नहीं जा सकते तो इसीलिए हम टनल के रास्ते जाएंगे. This is nothing like I remember it. How quickly a crown can lose its luster. Not abandoned then. Oi! Visitors! Apologies. We'll show ourselves out. ओह भाई ये मरना ही चाहते हैं लग रहा भाई. ऐसा नहीं मानेंगे भाई ये. खाली मारे गए बेचारे. I've only ever seen one man fight like that. And he's long dead. Then perhaps it's time you joined him. Oh man. The blessing of the Phoenix. It can't be. ये भाई ये थोड़ा जानकार टाइप का आदमी लग रहा है भाई मुझे. ब्लेसिंग ऑफ द फीनिक्स जब इसने बोला तो मैं समझ गया भाई. अब मुझे नहीं लगता है हमसे लड़ेगा. फट गई होगी इसकी. Forgive me, my lord. I knew not whom I addressed. You have naught to fear from us. तो ये समझ गया कि जो इस एरिया की क्वीन है उसी का लौंडा है. मतलब हम उसी के लौंडे हैं. भले ही वो क्वीन सही नहीं है, जुल्मी टाइप की है, लेकिन इट्स ओके. सर वर्ल्ड का लौंडा है ये. We can speak inside. और ये यूनिफॉर्म में नहीं लग रहे हैं भाई. ये शायद रेबलियन है क्योंकि जो क्लाइव है उसकी माँ के खिलाफ ही ये रेबलियन लग रहे हैं क्योंकि भाई उसकी मदर काफी क्रूर हो चुकी है. And those who wouldn't bend the knee? We left before the Empire could make examples of us, though we didn't go far. And we banded together to form the Guardians of the Flame soon after. Alas, there is only so much a handful of aging shields can do against the might of an empire. But we've seen to it that their stay has been anything but pleasant. Of late, though, we've had our hands full just trying to keep the Duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. The Cullings. We saw what happened in Old Hill. Aye, the foul work of the Black Shields and their mistress. You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her. Her hatred for bearers was no secret, but
She wouldn't have been ignorant of their value to the realm. No offense, my lord, but in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. She barely even cares for her own home. That much has been plain since the slaughter at Eastpool. And, since granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have grown. As to why, I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Her son. So Wade, the Black Shields have broken camp. They march in full Okay, force for Black Buick Shield फिर Bridge. से आ गया भाई. Then so do we. Make ready. This is their main host. If we remove the head, perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. If I do nothing, then the blood of their next victims will be on my hands. Yours and ours. We too have witnessed the crimes these men who dare call themselves shields have committed in my mother's name. It cannot be allowed to continue. We must put a stop to this madness. We must. So let us go with you. For the good of Rosaria. तो ठीक है भाई, ये भाई के साथ मिलके अपने को ब्लैक शील्ड को खत्म करना है. कुछ आग घुस आए कैंप में. Very well. If that is your wish, I would be honored to serve at your side. And we at yours. So Wade, let us do our duty. With pleasure, my lord. I imagine this endeavor will require more than just. ओके, तो बेसिकली आगे हम कंटिन्यू करेंगे शाम को अगली नेक्स्ट स्ट्रीम में. तो वेट के साथ मिल चुके हैं हम रोजारिया में हैं अभी, और हमारी मदर जो है वो ही यहाँ की प्रिंस रानी है. तो भाई वो बहुत क्रूर टाइप की जुल्म ढा रही है ब्रांडेड्स और बियरर्स पे. तो बेसिकली ये ब्लैक शील्ड भी शायद उसी के ही कुछ हैं टीम टाइप की, तो उनको पेलना हमने. तो ये सब हम करेंगे शाम को. तो मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में. बाय बाय, टेक केयर.